नेहा, पूछो क्या पूछना है बेटा। कुछ तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि डोमिनेंट कैसे है। यस सर। मैम मुझे पूछना था कि आप अगर बोल रहे हो कि डोमिनेंट है तो फिर वो कैरियर कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर डोमिनेंट जीन होगा तो वो सबके अंदर शो होगा ना, जहाँ पे भी वो आ रहा है। कैरियर तो तभी हो सकता है अगर वो रिसेसिव जीन होगा, वरना उसमें नेहा, वो आपकी डिजीज आवाज नहीं आ रही मैनिफेस्ट बेटा। कर लेगी। See, your question is really very good and very happy that you put up this. Dr. Deepak, please enable the sharing so that I can show. I'm unable to share, Deepak. मैम आई थिंक सर को आवाज नहीं आ रही है। Are you able to hear me, Dr. Deepak? सॉरी, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आ रही है सभी लोगों को? Yeah, we can hear you. शिल्पी, मैंने इनेबल कर दिया है आपकी शेयरिंग को। Okay. प्लीज कंटिन्यू करिए। Thank you. Yeah, thank you. Neha, see here. What does this pedigree shows? This pedigree does not show that this is a carrier. Neha, can you hear me? Yes, ma'am. See, अगर आप देखोगे इधर, what is written in this? This is written that it is a homozygous male. This is a heterozygous male. This is a homozygous female. This is a heterozygous female. This does not mean that they are carriers. This means that they are showing the disease, but they are having only one defective gene. They are having one normal gene. That's why they are showing as homozygous and heterozygous male and female. Okay. Now, being a heterozygous male and female or showing only one gene in them, still they are able to show the disease. That means this clearly shows that it is a dominant defect. That's why we call it as autosomal defective gene or autosomal dominant gene. Got it, Neha? Yes, ma'am. Yeah. So, ma'am, what is the difference? Now let's take a case of another. Yeah, मैम डिफरेंस क्या रहेगा कि अगर मतलब अगर इसमें रिसेसिव जीन होगा तो वो कैसे दिखेगा? अगर रिसेसिव जीन होगा तो फिर वो नॉर्मल दिखेगा. As normal tells you that they are all having recessive type. Okay, ma'am. Okay. Fine. Okay, now let's take one more case. उसमें let's find out whether it is autosomal disease or recessive or पहले तो ये पता करना है. दूसरा ये पता करना है whether it is dominant or recessive. So two conditions हमें पता करनी होती है कोई भी पेडिग्री देखने से पहले. First thing to find out, सबसे पहले हमें पता करना होता है whether it is autosomal disorder or it is a sex-linked disorder. First we will find out that. Second, हमें after पता करने के बाद कि suppose हमें पता लग गया it's autosomal, then we have to find out whether it's dominant or recessive. Or if we find out it's sex-linked, we have to find out whether it's dominant or recessive. So first of all, seeing this pedigree, can anyone tell me whether it belongs to autosomal or sex-linked? Sex-linked. Sex-linked. Reason? When there is no male carrier, either they are affected or they are not affected. Okay, they are affected or
not affected. Okay, chalo, let's take one case. Suppose आप लोग बोल रहे हो कि it is a sex-linked disorder. This is a carrier female. That means what is the condition in that female? This is the condition, right? Male is normal. That means male is not having any defective gene. That means उसमें problem, उसमें genetic condition क्या होगी? XY. Now let's suppose this female has got one affected gene and one normal gene from the father. This male is affected. That means the male got that affected X and got the normal Y from the father. Now this is the another child. This child is normal. That means the child, this male has got normal X from the mother and normal Y from the father. This female is having a condition of defected one gene and normal one gene. Now this again is one of the child. This again is this condition. Now if you see this condition here, this male is normal. That means iski condition kya hai? XY. This is a female which is affected. So can we have a normal male here? XY. Yes. Can we have a affected male here? X-Y. So yes. Now can we have a carrier female here? Because this female is normal. Can we have a carrier female? Yes. The defected X came from the male. This X, Y. So इस generation में अगर आप देखो ये सबका family charting में वो हमारा sex link verify हो जाता है. Now let's see the case over here. This couple has the male having the affected X and the normal Y. This is a normal female. So that means this is the condition. They are having normal son. That means this is the condition. This is the condition. And they're having one carrier female. Carrier female means one affected came from the father and normal X from the mother. Now here male is normal. Here male is affected. So this will be the condition. So that means it is being verified that yes, it is transferred from the male to the daughter, from the father to the daughter and mother to the son. So this verifies that it is a sex-linked disorder. Very good. Now coming to whether it's dominant or recessive. Is it dominant disease or recessive disease? Oh no, recessive disease. A recessive disease, correct. It is recessive, fine. Because if this V condition is it's given as a carrier female does not mean affected. And if they're having one defected gene and not able to show the disease, that means it has to be a recessive. So this pedigree shows the condition of sex-linked recessive disorder. So this is how we are reading the family charting. But this family charting is something which is ready-madely given to us. But if we have to make a family charting, will we be able to make it? Can we make a family charting? Yes, anyone? Can we make a pedigree charting very easily? क्या pedigree बनाना आसान काम है या थोड़ा difficult है? It's very difficult because पहली बात तो सबको पता नहीं होता. आपसे ही कोई पूछे आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता. तो इसीलिए it's very difficult to form the pedigree charting. वो एक पर्सन से नहीं होता है, आपको पूरी हिस्ट्री 3 जनरेशन पे जाकर के लेनी पड़ती है, तभी एक पेडिग्री चार्टिंग बनती है. Now let's one last question I'll ask you. Can by seeing this pedigree, can you find out what kind of disease is it? Autosomal or sex linked? First thing to find out is
whether it is autosomal or sex linked. Then find out whether it's dominant or recessive. सबसे पहले to find out whether it's autosomal or sex linked. How do we find out? Ma'am, sex linked. Autosomal recessive, ma'am. Autosomal recessive. Okay. I have Ma'am, two answers. sex-linked recessive. Okay. Ma'am, sex One, linked recessive. Sex okay. linked One of recessive. sex linked recessive. Okay. Recessive. And I had one answer saying as autosomal recessive. Okay. I have two answers, but both of them says recessive. So what made you think of being recessive? मैम अगर ये डोमिनेंट होता तो जो ऊपर की पेरेंट जनरेशन है उसमें भी अफेक्टेड शो होता. करेक्ट. तो देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन. स्किपिंग ऑफ जनरेशन क्योंकि हम एक ये फैमिली देख रहे हैं, इस फैमिली से इसका एक ये और इसकी एक ये फैमिली. देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन. स्किपिंग ऑफ जनरेशन हमेशा फॉलो करता है कि इट्स अ रेसेसिव डिसऑर्डर. सो रेसेसिव डिसऑर्डर इज करेक्ट. नाउ व्हाट मेड यू थिंक ऑफ बीइंग सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल? मैम ये मदर टू सन की तरफ ही जा रहा है इसीलिए. मदर तो कोई है ही नहीं अफेक्टेड, सिर्फ सन ही सन Ma'am, affected. male. मैम ma'am, male कैरियर हो preponderance. सकता है ना. कैरियर हो सकता है. ओके, बट अगर वो कैरियर है तो फिर रेसेसिव कैसे होगा? नहीं मैम, मदर कैरियर हो सकती है. अच्छा, But ma'am, वो तो मदर दिखाया कैरियर है. फाइन. हाँ, मदर तो कैरियर दिखाया नहीं है. फिर Ma'am, male preponderance. male preponderance. Okay, so that means only male is getting affected. So this is making you think of, since only male is affected, so it is sex linked. Ma'am, Sex linked means in particular it is Y linked. Yeah. Okay. Why can't we think of it being autosomal disorder? Autosomal क्यों नहीं हो सकता है? मैम ऑटोसोमल है क्योंकि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और जनरेशन में आ रहा है. पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और जनरेशन में आ रहा है. गुड पॉइंट. So this guides us towards autosomal. Okay, those who are saying sex linked, उनका क्या reason है? Because it's showing male dominance. That's why. अगर मेल डोमिनेंस दिखा रहा तो यहाँ तो मेल अफेक्टेड नहीं है, इधर भी मेल अफेक्टेड नहीं है, इधर भी नहीं है. तो अगर मेल अफेक्टेड नहीं है कहीं भी, दैट मीन्स, अब देखो, अगर आप ये बोलते हो कि ये एक्स लिंक्ड है, सपोज यू आर सेइंग इट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ओके, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, दैट मीन्स अगर मेल दिखा रहा है ये डिजीज, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ द मेल. तो ये जो एक कंडीशन है आपकी एक्स, तो ये या तो मदर से आया होगा, ऑब्वियसली मदर से ही आया होगा, राइट? दैट मीन्स मदर इज हैविंग दिस कंडीशन. बट आप कह रहे हो कि रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो रेसेसिव डिसऑर्डर है और एक जीन अगर आपको दिख रहा है तो व्हाट इज दैट? मदर में दिखना चाहिए या नहीं? नो मैम, रिसेसिव है तभी तो वो मदर में डिजीज शो नहीं हो रही है. हाँ. हाँ मैम, मदर में नहीं मदर show. कैरियर है. मदर कैरियर है. मदर इज कैरियर. ओके, चलो मान लिया मैंने, मदर कैरियर है, फादर की ये कंडीशन है और ये आपके पास अफेक्टेड मेल आ गया. ठीक है, और मदर ये वाली नॉर्मल है, तो इधर आपका जो मेल बना दैट इज नॉर्मल. दिस इज अ कैरियर फीमेल. इसको क्या बोलोगे आप? दैट मींस दिस फीमेल इज अ कैरियर. ओके, एंड मेल इज नॉर्मल. गया. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस जनरेशन देन? ये अगेन शी इज कैरियर. she is a carrier. Okay, then she has daughter. Okay, Not ma'am, on the two. Yeah, carrier. carrier. Okay, and this male is normal. Then this goes to this male and this is again a normal or a carrier. So अगर ये पेडिग्री बनाए तो हमें रेसेसिव का तो क्लियर पता चल गया, and it is sex linked, ये भी पता
So what is this kind of a disorder? Sex-linked recessive. Okay, now those who are saying autosomal, what argument do they have for saying it was autosomal and not sex-linked? Everyone agrees it is sex-linked recessive. Should I tell what the answer is? Answer is sex-linked recessive only. Okay, fine. So इस तरीके से हमें पेडिग्री चार्टिंग अगर मिलती है तो हम ये पता लगाते हैं कि which disease is sex-linked, which is autosomal, which is recessive, which is dominant. Fine. Now the pattern of inheritance of some disease is pretty straightforward, but for others it is more complicated. Straightforward means like we saw, okay, the mother was having the disease, color blindness, hemophilia, all these are sex-linked diseases. They definitely will pass on from one generation to the other. Agar father may be hai to. But some of the diseases are very, very complicated. Sometimes all it takes to develop a disease is inheriting a gene. One single gene affected hai and we will get the disease. That is called autosomal dominant. Like we have Huntington disease, Marfan syndrome, neurofibromatosis type 1. All these diseases are having one defected gene, and since they are dominant, they will definitely appear in the next generation. So if any one of the dominant gene is present, then 50% chances are there in the child to have it. But other times, both the parents have to be contributing a change in same gene. That is called as autosomal recessive. So if you are having autosomal recessive disorders, like we have congenital deafness, cystic fibrosis, beta thalassemia, spinal muscular atrophy, sickle cell anemia, Tay-Sachs disease, all these are from the recessive disorder, but they all are autosomal. So for them, the children might be having 25% chance of inheriting. The chances becomes little low. So if in the case of a dominant single gene disorder, the chances are pretty high to get the disease in next generation. And if it is a recessive disorder, then the chances are lesser than 50%. You can say approximately 25% chances. And these diseases are not shown in each and every generation. And as we have discussed earlier, that chromosomal disorders like Down syndrome, Turner syndrome, these all are chromosomal disorders. They are not inherited from one generation to other. Now, those diseases which are coming under the category called as polygenic disorders, in them, the heritable features are more complex. Like, for example, Alzheimer's disease, arthritis, cancer, dementia, diabetes, high blood pressure, heart disorders, etc. All these are influenced by many genes. So there is not one factor which is causing that disease, not one single gene which is the causative agent for them, but we have multiple factors. Like environment plays a major role, lifestyle plays a major role, and diet also plays a very, very crucial role. So common health problems such as heart disease, type 2 diabetes, and obesity do not have a single genetic cause. They are influenced by multiple genes. So we call them as polygenic disorders. So lifestyle, environment, exercise, diet, pollution, all these are the cause of those disorders. And if we are not following a proper lifestyle and a proper diet, then our chances become much more high. And if we have that disease in the family, then our chances is very, very high. So then what is our role in that? What should we do if we get to know that a person is having some disease in the family running? What is the role we have to play? We as a healthcare provider should encourage regular checkups, testing the people with condition that run in the family. We should advise them that they should change the lifestyle, adopt a healthier diet, regular exercise, quitting smoking, etc. So all these will not eradicate, but will reduce the chances, and maybe it will come in the later life age. If a person is not having a proper lifestyle, maybe the disease
will appear in early life, maybe in early 30s. But if they're following a proper lifestyle, they're following regular exercises, then they might just prolong the disease to occur maybe in the later life, after 50s. So we should give them and encourage them that what is best for them, what lifestyle changes we should make them to do, proper regular checkup should be done. All these are the things that we as a healthcare providers should encourage them to have. So this was what I wanted to discuss today. And if I have some questions and some discussions, I'll be very, very happy. Yeah. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी, थैंक यू। और मैं जानना चाहता हूँ जो बाकी लोग हैं जो इस चार्टिंग को समझे, इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ हिस्ट्री के लिए है? हिस्ट्री का मतलब सिर्फ पास्ट से है या कुछ और भी इसका सिग्निफिकेंस है जो आज प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ऐसा कोई बता पाएगा? बोलो आराम से, जैसे वहाँ मेरे साथ क्लास में बोलते हो वैसे ही बोलो। सर यही है कि हम आने वाली जो जनरेशन हैं उनमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से डिजीजेस आ सकती है और उसके हिसाब से मेजर ले सकते हैं। गुड, बहुत अच्छे। ये होता है पता है हमारे साथ, मतलब ये जरूरी नहीं कि हम मेडिकल साइंस में आएंगे और इन चीज़ों को सीखेंगे। तो जब हम लोग पिछले उसमें जाते हैं तो सभी लोग, जैसे अगर कहीं एक दूसरे की कोई शादी की बात होती थी तो वहाँ भी तो यही होता था ना कि चेक करते थे कि किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ पे कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है या कोई और ऐसे फैक्टर तो नहीं है जिससे आगे चल करके कोई डिजीज ना आ जाए। ऐसा पहले से होता है। तो बस मेडिकल साइंस ने हमें एक क्लू दिए हैं, हमें टूल्स दिए हैं इसको पहचानने के लिए और इसको बनाने के लिए। जहाँ तक जब डॉक्टर शिल्पी बात कर रही थी हेल्थ सेक्टर को लेकर के और जो डेफिनेशंस बता रही थी और इस चार्ट की सिग्निफिकेंस बता रही थी, आज भी ऐसे बहुत सारे फिजिशियन हो गए हैं जो इन चार्ट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं करते। अब आते हैं हम सिर्फ होम्योपैथी की बात पे। अभी तक तो हम पूरे मेडिकल सिस्टम की बात पे आ रहे थे, लेकिन अभी हम लोग आ रहे हैं सिर्फ होम्योपैथी की बात पे। तो अगर हम होम्योपैथी को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? होम्योपैथी का जो कनेक्शन है वो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो अभी हम जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव ये सब पढ़ रहे थे, ऐसे ही हम लोग अपने मियाज्म को कनेक्ट करते हैं। मतलब जब मैं अपने 3rd ईयर में था तो मैंने एक मियाज्मेटिक चार्ट बनाया था XY और XX का, और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। और मतलब मेरे से बहुत सारे जूनियर्स और मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने मेरे से वो चार्ट लिया और मैंने उस चार्ट पे बहुत सारे काम किए। हमें ये पता लगाना होगा कि जो मियाज्म है वो किस समय कौन सा डोमिनेंट था और कैसी फेज में वो आगे बढ़ा। जैसे आज मेरी ओपीडी में जब डॉक्टर शानवी इस बात को कह रही थी कि सर सिफिलिस तो आज बहुत ज़्यादा फैल गया होगा, तो मैंने उसको यही समझाया कि मैंने कहा सिफिलिस बहुत ज़्यादा फैल गया है, लेकिन वो कहाँ पे डोमिनेंट है और कहाँ पे नहीं है ये पता लगाना हमारा काम है। ये जरूरी नहीं कि हर एक जनरेशन में सिर्फ सिफिलिस ही फैली होगी। हो सकता है ना कि कहीं सोरा डोमिनेंट होगा तो सोरा भी फैला होगा, साइकोटिक डोमिनेंट होगी तो साइकोटिक भी फैली होगी। तो जब हम इन सब चीजों का कनेक्शन अपने इन टूल्स को लेकर के होम्योपैथी के साथ करेंगे तभी होम्योपैथी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगी और आगे काम करेगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आजकल ऐसी डोमिनेंट डिजीज पर जो जेनेटिक डिजीज है उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है। मतलब जैसे मैंने 2012 से लेकर के 2017 तक कुछ ऐसी डिजीज पर काम किया जो जेनेटिक डिजीज थी, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे पास जो बच्चा आया जिसपे हमने जेनेटिक केस को डिस्कशन किया, हमने उसकी मेडिसिन निकाली, लेकिन कभी जब वो बड़ा होगा तब उसकी शादी होगी, फिर उसके बाद उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बाद बच्चों में हमें देखना है, फिर उसके बाद पता लगा कि बच्चे जब बड़े होंगे तभी पता लगेगा वो जेनेटिक डिफेक्ट आया या नहीं आया और हमारी मेडिसिन ने उसमें काम किया कि नहीं। तब तक हो सकता है कि मैं ना रहूं, या हो सकता है कि जो हमारे सिस्टम है या जो मैंने जो हिस्ट्री ली है वो ना रहे। तो ये जो काम है इंस्टीट्यूट वाइज चलते हैं हमेशा। तो होम्योपैथी में थोड़ा इंस्टीट्यूशन को लेकर के कमी रही है, इस वजह से थोड़ी जेनेटिक हिस्ट्री मतलब ये जेनेटिक डिजीज पे काम है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। लेकिन अगर कोई होम्योपैथिक को लेकर के जेनेटिक डिजीज पे काम करेगा तो मुझे लगता है कि जो मेडिसिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड को हर्ट कर सकती है, मतलब अगर हम किसी के सपने ठीक कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि उस मेडिसिन में सब चीज़ों को ठीक करने की ताकत है। वो जेनेटिक चेंजेस भी ला सकती है जब हम इतना टच कर सकते हैं तो। लेकिन बस हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और इन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा भी डॉक्टर शिल्पी ने बताया। कोई और ऐसा कुछ बताना चाहे आज के लेक्चर के बारे में, या डॉक्टर शिल्पी आप कुछ और बोलना चाहें? You have raised a very good point that whatever I have told, pedigree analysis and इसको मियाज से कनेक्ट करना and then finding out, जैसे हम लोग अपना जब केस हिस्ट्री लेते हैं, so when we take the case history we actually find
आउट के उसका मेंटल बैकग्राउंड क्या है, या जैसे सपोज करिए कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इज द इमोशनल फेज शी इज गोइंग थ्रू, ऑल दैट अफेक्ट द चाइल्ड. So this pedigree analysis is not only about के autosomal dominant या recessive, हमें उसको health से combine करना है कि emotional aspect, physical aspect और social aspect, all three combined together plays a major role. So definitely miasm हमारा that is one of the best point of homeopathy, best thing of homeopathy what we have, and we should always try to link हमारे सारे patients को कि what is, and proper case history is very very required. So और कोई कुछ बोलना चाहे, कोई भी बोले आराम से बिना झिझके. ये क्लास है और हम लोग सब एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, ऐसा सोचो बस. मेरा मोटिव है आप तक सब लोगों को नॉलेज पहुंचा देना, बस कैसे भी करके, जो मेरे पास है उससे ज्यादा ही नॉलेज पहुंचे. डॉक्टर श्वेता. सर हाँ जी. सर आई हैव अ डाउट कि जैसे डाउन सिंड्रोम के केसेस में हमें पहले पता लग जाता है कि पेरेंट्स को कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो सकता है, तो हम होम्योपैथिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं, मदर को मेडिसिन देके कि बच्चा ना हो वैसा. गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन देखो, जब तुम्हें पता लग गया कि वो डाउन सिंड्रोम हो गया है, तब हम कुछ नहीं कर सकते. डाउन सिंड्रोम हो कुछ गया नहीं है कर मतलब सकते. ये तो कंडीशन हमें पता लग गई कि तो हो चुका है. अगर उससे पहले पता होता कि इसको कोई चांसेस हैं डाउन सिंड्रोम होने के, तो हम जरूर काम कर सकते हैं. हमने काम किए हैं ऐसे, कोई बहुत सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को लेकर के आए हैं, जिसमें एक लेडी को 2 बार तक जेनेटिक डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से उसको अबॉर्ट कराना पड़ा 3rd या 4th मंथ पे मेडिकल टर्मिनेशन के साथ. लेकिन जब हमने 3rd वाले में काम किया तो 3rd वाले बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल हुआ, कोई डिफेक्ट नहीं आया, थ्रू आउट प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल रही, जो बेबी हुआ वो भी नॉर्मल हुआ. तो जब हमें ये पता लग गया कि डाउन सिंड्रोम हो गया है, तब तो वो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमें ऐसा डाउट है कि हो जाएगा, तब हम जरूर काम कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. और डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर प्रियंका, मानसी, नेहा, कोई भी कुछ बोलना चाहे. सुमित, आप कुछ बोलना चाहो. एक्चुअली डॉक्टर शिल्पी है क्या ना कि जो इनकी क्लासेस होती है ना, वो ऐसी क्लासेस होती है कि यहाँ पे सब लोगों को चुप रहना ज्यादा अलाउ है. मतलब जो, और हमारे सिस्टम में बोलना ज्यादा अलाउ होता. हम लोग जब तक बोलते नहीं थे तो हम लोगों को हमारा खाना नहीं पचता था या हमारी क्लास पूरी नहीं होती थी. तो बस डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं. बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतना बढ़िया से सब कुछ समझाया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम सब लोगों ने सीखा है, मतलब मैंने भी आज कुछ नई बातें सीखी हैं, तो वो कल से ही एप्लीकेबल हो जानी चाहिए हमारी लाइफ में, हमारी जो केस टेकिंग है उसमें, हमारे जो ट्रीटमेंट स्टाइल है उसमें. तो कल से कुछ ऐड हो जाएंगी और जो हम मिस कर रहे थे वो भी पूरे कर लेंगे. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमें इन टूल्स को कनेक्ट करना चाहिए. जब तक हम इन टूल्स को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, हम ये सोचते रहेंगे कि यार पेडिग्री एनालिसिस तो बेकार की चीज है, मतलब छोड़ो, कौन बनाएगा इतना लंबा चार्ट, या क्या होगा अगर हमने बना भी लिया तो क्या होगा, मेडिसिन तो वही निकल के आएगी. हाँ बेशक मेडिसिन वही निकल के आएगी उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं जो मिल जाएंगे. तो टूल्स का इस्तेमाल करना हमेशा हमें आना चाहिए. और हो सकता है कि मुझे सब केसेस में ना करके आप जो भी अच्छे केस प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे आप इन सबको जरूर चूज करें. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पी आपका. और हम ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे. और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में किसी ना किसी एक को ऐसा रिक्वेस्ट करूं कि जो लोग पढ़ाना चाहें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्लिनिकल क्लासेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो आज आए नहीं है. आज भी, मतलब मेरी क्लास में तो आते ही नहीं, लेकिन आज यहाँ भी नहीं है, तो वो मुझे पता लगता है ग्रुप में कर क्या रहे हैं आखिर. तो इस पे भी काम करते हैं, देखते हैं जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर. Thank नमस्कार you. सभी को. नमस्कार. Yeah, thank you. Thank you. आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑर्बिट क्लिनिकल इंस्टीट्यूट, जो हमारा नाम है, सॉरी अभी मुझे नाम भी पूरा लेना नहीं आ रहा है, ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड होम्योपैथी. और मैंने ये सोचा कि जब मैं पढ़ाता था अपने यहाँ पे सारी क्लिनिकल क्लासेस में, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को या बहुत सारे अपने जो सीनियर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करी कि आप भी इन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए आओ.
लेकिन जनरली टाइम की कमी की वजह से कोई भी नहीं आ पाता, तो हमने एक जूम सेशन लेना शुरू किया है और ये सभी के लिए है जो भी हमारे क्लिनिकल क्लास के ग्रुप में है। तो आज ही जो पहला लेक्चर है वो हम डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा से लेंगे, डिजीज एनालिसिस एंड पेडिग्री चार्टिंग और उसकी होम्योपैथिक अप्रोच के साथ। मैं डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा के बारे में बता दूं कि डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा हमारी ऑर्बिट क्लिनिक की एसोसिएट कंसल्टेंट हैं और ऑर्बिट क्लिनिक बेंगलोर को संभालती हैं। डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा 98 बेस्ट नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पास आउट हैं और इन्होंने जो एमडी है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में की है। होम्योपैथिक प्रैक्टिस के साथ साथ एक जो इनकी और खासियत है वो ये है कि ये कर्नाटक बोर्ड में टीचिंग करती हैं और इनके अपने एक इंस्टीट्यूट हैं बेंगलोर के अंदर, और जो इनकी बुक्स हैं वो भी कर्नाटक बोर्ड में चलती हैं। और पिछले 2 सालों से अमेजन पर इनकी जो बुक है वो सबसे टॉप सेलर्स में या सबसे टॉप पर आ रही है। डॉक्टर शिल्पी के बारे में और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग थोड़ा पढ़ें। चाहे कम लोग हैं लेकिन हम जितने भी हैं बस वो पढ़ रहे हैं। ये ज़रूरी है कि पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए सभी के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शिल्पी आप अपने सेशन को जो है वो शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज फर्स्ट क्लास में। थैंक यू डॉक्टर दीपक एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया कि आई एम फ्रॉम 98 बैच, आई एम हिज बैचमेट एंड मतलब बातें तो होती रहेंगी। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद के मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, व्हाट वाज द रीजन कि आई हैव चोजन दिस टॉपिक। एक्चुअली the reason why I've chosen this topic is when we as a doctor are sitting and in front of us many patients are sitting, तो कई बार एक पेशेंट हमारे पास आकर के एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, मेरे पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है, मेरे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारी डिजीजेस के नाम लेते हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे को भी वो होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही नहीं, सारे डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि हमें उसका आंसर क्या करना चाहिए। बट बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन हमें खुद को पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिजीजेस ऐसे हैं जो कि हेरिटेबल हैं, जो कि हेरिडिटरी के थ्रू वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पास नहीं होते। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज जब भी मैं स्लाइड दिखाऊं आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये एक इंटरेक्टिव सेशन हो और आप लोग सब बीच बीच में मेरे से क्वेश्चंस पूछे और अपने भी व्यूज रखें। इट्स नॉट ओनली दैट आई एम हियर टू आंसर यू, आई एम ऑल्सो रेडी टू वेलकम ऑल द थिंग्स व्हिच यू आर टेलिंग। सो आई बिलीव एवरीवन इज अ स्टूडेंट, हमेशा टीचर नहीं होते, we have to be a student ready to gain it. So the topic is disease analysis and pedigree charting. We'll come to pedigree charting a little later. First, let's see what actually is disease. So there are actually 3 aspects of health, or when we are talking about being healthy. Being healthy has 3 aspects. उसके 3 भाग होते हैं, 3 parts होते हैं. One is physical aspect, which we call as disease, mental aspect, and a social aspect. So when all the 3 are balanced, we say a person is healthy. Healthy होने के लिए ये तीनों का elements का proper होना बहुत जरूरी है. Now physical, जो कि हम normally बोलते हैं कि जब हम physically fit नहीं हैं, that means we are having some disease. And disease is formed by 2 words combined together, dis-ease. Dis means not in a comfortable position. जब हम comfortable नहीं होते हम कहते हैं dis. और ease is comfort. So non-comfortable position is called as disease. Now, but it's not only physical aspect कि कहीं हमें pain हुआ, कहीं हमें चोट लग गई, that only that is called as a disease. But एक health का एक दूसरा aspect भी है, that is called as mental aspect, which in common terms we call as emotional aspect. Emotional aspect means how a person behaves. Now, if suppose किसी को pain है, किसी को कोई किसी ने bad news सुनी, हर का अपना एक reaction होता है उसको करने का. If you hear a bad news, either you will cry a lot or you will be becoming silent. और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मे बी हम लोग कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं किसी चीज को लेकर के. So how balanced we are emotionally, mentally
that also comes under health. And third is social aspect, जो कि हम लोग बहुत कम लोग हैं जो इसको एक हेल्थ का पार्ट मानते हैं, बट सोशली हेल्दी होना, सोशली फिट होना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ. जब तक हम अपने साथ में रहने वालों के साथ अच्छा सा बिहेवियर नहीं करेंगे, तब तक हम सोशली वेलबींग नहीं कहलाएंगे. सो ये एक ट्राइंगल की तरह है, और ये तीन पार्ट जो मैंने बताया, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये ट्राइंगल के तीन पार्ट्स होते हैं. Whenever one side receives too much, अगर हम किसी भी एक चीज को ज्यादा भाव देते हैं, ज्यादा तोल देते हैं, when we give importance to one side, obviously the other two will be getting disbalanced. तो हमें तीनों चीजों का बैलेंस करना आना चाहिए. So to sum up, aspects of health are: to achieve a high quality of life, a person cannot concentrate only one aspect of health. We have to have good physical, keeping yourself fit and healthy; mentally, keeping yourself alert; emotionally, keeping yourself happy and being good with the others. Like you can see a triangle, mental, social, physical aspects are equal in the first case. Like the first case है हमारा, इसमें all the three aspects has been equally given importance, so it is called as a balanced health triangle. Whereas here हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, हमने बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचा, and we were not mentally fit. That means we are giving more importance to the mental. As a result, both physical and social aspect will be impacted. So this is how our health comes under three aspects, and all the three aspects we have to consider. So this was an introduction about being healthy, or health ke what are the three aspects. Any doubts, any questions, anything you all want to put up? Can I know who all are there in the meeting apart from Dr. Deepak? One I can see name is Neha. जनरली अभी जो भी हैं उसमें से ज्यादातर हमारी टीम के मेंबर हैं, और जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, अच्छा, उसी में से हैं. डॉक्टर मेरे पास मानसी है, नेहा है, एक ही बैच के हैं, सुमित, तीनों बैच एक ही बैच के हैं. डॉक्टर साक्षी गुप्ता हमारी टीम के मेंबर हैं, डॉक्टर प्रियंका हमारी टीम के मेंबर हैं, डॉक्टर रिचा मेरी सबसे प्यारी स्टूडेंट है, आईफोन किसका नाम है मुझे नहीं पता, और साक्षी कर किससे मैं सोनिया बिहार में एज ए इंटर्न है. Okay. So anything anyone of you want to ask और कुछ discuss करना चाहते हैं इस बारे में? Like if you have come across with any cases या ऐसे कुछ patients आपके पास आते हैं, anything which you want to discuss with, this is the platform to discuss all those things. So I would like to ask Dr. Deepak, आपके पास कुछ है discuss करने के लिए about health? Have you come across with anything like आपने देखे होगे कि किसी पेशेंट ने इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस लेकर के, तो आपने देखा ऐसे कौन से केसेस के उनके फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए? हाँ, ऐसा होता ही है हमेशा, क्योंकि ये तो जब भी कभी वो जो आपने टर्म बताई ना, डिजीज का मतलब यही कि डिसीज मतलब कुछ तो डिस्टरबेंस हुआ ही है. तो ट्रायंगल में एक लाइन भी कहीं छोटी बड़ी होगी तभी हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आने, और ये होता है. मतलब अगर इसको प्रैक्टिकली मान के चलें तो प्रैक्टिकली सबके साथ होना है. मतलब पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके साथ ऐसा कोई भी पूरे परफेक्ट ट्रायंगल पे चलता हो. लेकिन फिर भी हमें बैलेंस करना आना चाहिए कि हम उस ट्रायंगल को बैलेंस कैसे कर लेंगे. तो छोटा सा पॉइंट है. बाकी आप मुझे लगता है कि आप पहले स्टार्ट करिए. एक बात और बता दूं सभी लोगों को कि अगर ये टाइम ओवर हो जाता है तो सेम लिंक पर दोबारा से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्री वर्जन है. तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब तक हम क्लास खत्म नहीं करते हैं, जब तक ये चलता ही रहेगा सेशन. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी, कंटिन्यू करो. Fine. So today we are going to mainly talk about, as I said in the initial one, that heredity. Now what is heredity? Heredity means it is a process of transfer of characteristics from one generation to other. From one generation to other, like we commonly come across, like a patient says, oh, your mom had diabetes and you too would get it, or your dad is having hypertension, then you too can end up getting it. But do we actually have this case that everyone who has some disease running in the family, they will be suffering from it? क्या हर किसी को ऐसा हो जाता है? तो ऐसे कौन से डिजीजेस हैं या ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते
हैं to tell the person के which disorder you are going to have it. So उस condition में हमारे कुछ disorders होते हैं जो कि कभी भी one generation से दूसरी generation pass on नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके बहुत high chances होते हैं pass on होने के. So what is a hereditary genetic disorder? So disorder occurs when one or more genes are altered. So if we see what is a gene, so इसके लिए आपको थोड़ा सा go back to your theory what you have learned in the first year. Physiology में हमने पढ़ा है कि like chromosome, when you talk about in a human being, in a man, there are 46 chromosomes in a cell. These 46 are aligned in the way that there are 23 pairs made. Now these 23 pairs which are made, they are called as homologous chromosomes. Now homologous basically means which have same aspect, which are same in everything, same shape, same function, same number of genes. Now where does a gene come? What part of a chromosome is a gene? If you see the whole chromosome is made up of two things, DNA and some proteins which are called as histone proteins. Both of them together make up chromosome. दोनों मिल करके they'll make up the whole structure of chromosome. Now a small part of this whole chromosome which is important for giving rise to any one protein. हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो सब प्रोटीन पे डिपेंडेंट होते हैं. लाइक बनाता है, some might be making a hormone, some might be making some structure of the cell membrane, but directly, indirectly, everything comes to making a protein. So every gene is responsible for making a protein. Now, if one gene gets altered, then that gene, the functioning of that gene will be affected, and as a result, we can get that disease. Now, let's come to a very commonly asked disease, that is we talk about, say, diabetes. Now, what is diabetes? What happens in diabetes? In diabetes, the insulin production is altered. Now, as we all know, and here I'm not here to discuss about diabetes, that we have type 1, type 2, and then gestational diabetes is there, but that is not our area of concern right now. But this diabetes can be not only because of one gene. There are many aspects which control the diabetes, like obesity is one. Not only the person who is having altered insulin production, a gene which controls the fat production, that metabolism, if that also is defected, that also can result to diabetes. So what are genetic disorders? Genetic disorders occur when one or more genes are altered. If this genetic alteration is passed on to the offspring, it is a genetic disorder. Therefore, we should clarify that not all genetic disorders are hereditary, since they are often not passed to the children. So it's not necessary that we will always get the defective gene. We might get the good gene, we might not get the bad gene also. So hereditary is something which is just a by chance thing. It is just that we might or we might not get that disease. Then which one is the one which we will get and the one which we won't get? So to know that, we should know that what types of diseases we have. Like we have some diseases come under the category of congenital diseases, that is since birth they are present. And some are acquired, developed after the birth. Now, can anyone give me some examples of congenital diseases? Anyone? सब लोगों को मैंने अनम्यूट के लिए अलाउ कर दिया है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और अच्छा लगेगा कि सब लोग इंटरेक्ट करो. Okay, I got one answer. Cystic fibrosis by Dr. Richa Pawar. Okay. Those who are not able to mute themselves can send in the chat box. Cretinism.
Cretinism, do you think, Dr. Deepak, is congenital? मैं तो अभी बाद में बोल दूंगा, पहले सबको आंसर करने दो, नहीं तो रुक जाएंगे. Okay, fine. Cretinism, fine. Cystic fibrosis, type 1 diabetes, Down syndrome. Yeah. Then anything else? Yes, correct. Cleft palate. Birth defects like cleft palate. Yes. Okay. Ventricular septal defects. Thalassemia. Hemophilia. Correct. Okay. So we got so many examples of congenital diseases. So congenital diseases are the ones which are present since birth. So what do you think? Are these congenital diseases something which the parents were having and they transferred to us? Like one example is cleft palate. A child who is born with cleft palate, is her or his parents also having cleft palate? No. So it's not necessary that congenital diseases are hereditary. Okay. So the parents to the child, but sometimes the parent themselves doesn't know that they are having those diseases. So what do we call such parents as? We call such parents as that they are carriers. They are not the one which are showing the disease, but they are having one defective gene. But since it is recessive, it is not in dominant state, it is recessive. That's why it is not shown in them. But if both the parents are having that defective gene and by chance they transferred that defective gene to their child, the child will get the disease. That is what, if you remember, in Mendelian principle, we have learned that if suppose a condition is, suppose there is a female, this is a colorblind example. This is a mother who is having one defective gene of color blindness. She got married to a male who is not colorblind. In that case, what are the chances that children can be colorblind? So if you see this and this coming together will lead to a girl child, which is again a carrier. This girl will not have the disease. But if this defective gene comes with the Y, then that male will be a colorblind child. Because in a male, only one X is there, and that is sufficient enough to show the disease. But if the other X comes with the Y, other one will not have the disease. So this is how we can say that some congenital diseases might be transferred from the parents to the child, and some might not be. Now, congenital diseases also come under two categories. One are coming as, they are called as gene defects, in which only one particular gene is affected. And if there is a chromosome which is affected, then usually those chromosomal diseases, like I got the answer from few of you as Down syndrome, Klinefelter syndrome, Kreutzfeldt syndrome, all these syndromes will not be transferred. They are not heritable. They are not transferred from parents to the child because they are because of the chromosome defect. Now, coming under acquired diseases which develop after birth, that has been categorized as communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease are the ones which are transferred from infected person to a healthy, like we say, typhoid is there, cholera is there. All these come under communicable diseases. So they are not transferable. They are not genetical disease. Non-communicable disease do not spread from a diseased person to a healthy person, like if a person is having deficiency diseases, that is that the person is having
that is not transferred to the other one. Allergies, cancer, other diseases. But we have heard in this, cancer comes under that. If the family is having cancer, then we consider that for us as a homeopathic doctor, a family having a cancer history is very, very important for us. We give a +3 point that a family is having cancer, or the father was having, or grandparents were having. Same thing, we always consider the allergies which the parents are having. So if the child is presenting with some allergies, maybe we say that the parents would be having that allergy. So there are many things which, though normally if you see in the books, they come under non-communicable diseases. They do not spread from diseased person to a healthy. So it is during that aspect of health that this allergy, if suppose I am sitting with a person who is having some allergy to dust, I will not get it, but I might get it from my parents. Cancer also will not affect a person who is living with a cancer, but a person's family history of having a cancer might get the disease. So we have to find out now which of these are the diseases which are coming under the genetic disorders and can be transferred from one person to the other. Now, here we have a list of few diseases like sickle cell anemia, muscular dystrophy, Tay-Sachs syndrome, cystic fibrosis, Huntington's disease, Fragile X syndrome, beta thalassemia, and so on. What do we talk about? What do you think about? Are these transferable from the parents to the children? How many of you say that they are parents to children? Please send in the chat box if you say any of these can be transferred from the parent to the children. What about sickle cell anemia? Is it transferable? Yes, sickle cell anemia is transferable. Dr. Priyanka says no, it's not transferable. Okay, what about Down syndrome? Is it transferable or not? Down syndrome, majority of you say no. Okay, what about chronic myeloid leukemia? No. Okay. What about, what's the full form of PKU? What is PKU disease and is it transferable? Phenylketonuria, correct. Is it transferable from the parents to the offspring? No. Okay. Fine. So I'm not here to tell you that who is wrong, who is right. I just wanted to see that many of these diseases are transferred from one person to the other, and some of them are genetic diseases. That means in which only some genes are affected. Down syndrome, Cry-Du-Chat, all these, and Tay-Sachs syndrome, all these three which are there, they will never be transferred from one generation to the other because they are just purely chromosomal diseases. Now, if suppose a person is sitting in front of us and we have to find out that whether the chances of that person transferring it to the family, to the next generation, is there or not. So how do we actually find it out? For that, we have one thing called as family history. So for us as a homeopathic physicians, family history is very, very important. We record the health information about a person and his or her very, very close relatives. So what do we actually get from this health history? We actually get the information or a complete record from 3 generations at least
of relatives, including children, brother, sister, parents, aunts, uncle, we get at least 3 generation information. We record them, and the families having similar genetic backgrounds and often similar environments and lifestyle. Together, these factors can give us clues to condition that may run in a family. So if there is some disease which is running in a family, by a proper case history and a proper family history, we can find out that which disease runs in a family and which disease won't be transferred to that. For that, we are having a condition called as pedigree analysis. So pedigree analysis is basically a charting, a record in which we, it looks like this. It is somewhat like this, as you can see here. So here we are having the record of 3 generations. So these are the 3 generations the records have been given. So here, what are the important points we have to remember about pedigree? And when we do the charting, what are the various symbols which are used? So the symbols which are used in pedigree charting, I know many of you will be aware of it. A male is always denoted by a square. Female is always denoted by a circle. A line joining between them shows a meeting between them. And this is how the children are given. So when this symbol comes and these 2 are given, that means this is a male child, this is a female child. If it's a twin, then this kind of a symbol is used. Monozygotic twins, then this type of a symbol is used. If in case there are more than 2 children, then this is how we represent. Circle with some number denotes how many female children are there. So these are the various symbols used. Now, if suppose we are talking about one disease which is running in the family, and we have to tell that the male suffers from that disease, then we will color that with a dark color. That shows that the affected male is there. Or if a circle is colored, this shows that the female is affected. Secondly, if suppose it is half colored and half light colored, this shows that they are the carriers. So this denotes them to be the carrier. Carrier means they are having one disordered gene, they're having one defective gene, but it is unable to express itself. So that means the gene which is affected, present over there, is of a recessive nature. It's not dominant. Now, if we have made some pedigree analysis, we should remember that there are 4 types of diseases that can be spoken about through pedigree analysis. Diseases which are affecting the autosomes. That means we have in the 23 pairs, there are 22 pairs which are called autosomes. One single pair is there which is called as sex-linked chromosome, or also called as allosomes. They are called as X-linked chromosomes, or we can say they are called as sex-linked chromosomes. Now, if a disease is there which is affecting the autosomes, we call that as autosomal disease. If a disease is affected in the sex-linked chromosomes, then we call them as X-linked chromosomes or diseases. Now, autosomal disease again can be dominant category and recessive category. And X-linked also can be dominant and recessive. So if suppose we are given a pedigree analysis, this is how the charting is made. How to find out whether a disease is autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, or X-linked recessive. How do we actually find it out? Anyone has any clue how to find out whether it's an autosomal disorder or a sex-linked disorder? That is one thing we have to find. Second thing we have to find is whether it comes under dominant category or recessive category. Any idea? Dr. Shweta? You're very quiet today. Can I have some answer from your side?
Okay, I'll tell you how to find out whether a disease belong to, okay, this is a sex-linked disease. How come, Neha? What made you think that it is a sex-linked disease? Okay. See, if we have to find out whether any disease is sex-linked or autosomal, we have to see a pattern. A pattern is, if it is sex-linked, it will always be transferred from father to daughters and mother to son. If that is the condition present here, then it will definitely be sex-linked. And if it is dominant, it will never show any skipping of generations. All the generations, whichever we study, they will be having it. Like here, if you see, this generation also has a disease. This also has a disease. This also, and this also. So one thing is clear, when all the generations are affected with the disease, that it is coming under the category of dominant. If we see the condition, whether it is transferred only from the male to a female or a female to a male, then it will be sex-linked. So are we having any such pattern? Not. Here we see that the female is carrier. Here also male is a carrier. If male is a carrier, that means it cannot be sex-linked, because a male can never be a carrier. So such type of diseases are autosomal, and they are called as autosomal dominant diseases. So two things should be there in order to differentiate whether it is autosomal or sex-linked. We find out where